Hello and welcome to the Clad Possible YouTube channel. Today we will be taking up a topic video, and the topic for the day is the 16th Finance Commission. So let's try to understand what this is all about. Now, very recently, it has been announced that the government has appointed Arvind Panagaria as the 16th Finance Commission chief. So now what all is important for us? Of course, this man, and why is he important? And we'll take this up at the very end. But more than that, what is important is what is a finance commission? How is it made? Who was the first chief? And what are the functions of a particular finance commission? So it's written right here. It's a critical constitutional body. Let's try to understand a little bit about it. Now, the very first thing is, what is a finance commission? So, this is a constitutional body under Article 280 of the Constitution. And what does Article 280 say? Let me make it very, very simple. You see, ours is a quasi federal government, right? So, of course, the center has more authority than that of the state. And our very first article of the Constitution also says that India, that is Bharat, is a union of states. So, what happens is usually the union government, of course, has more money in their funds, and so it in order to take care of the development of the entire country, what usually happens is that the union government gives a little bit of a share of its own money to the state governments. Now, since there is so much of a diversity, we cannot relate our country and our country's polity to that of the United States of America. दोनों के दोनों देश बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि वहां पे क्या है, हर एक राज्य हर एक स्टेट को इक्वल अथॉरिटी मिलती है. यहाँ पे स्टेट्स को जो फंड मिलता है वो एरिया, पॉपुलेशन, थिंग्स सच एज फाइनेंस, इकोनॉमी, ऑल ऑफ दैट इज टेकन इनटू कंसिडरेशन. तो ये पर्टिकुलर बॉडी क्या करती है, बहुत सारे फैक्टर्स को दिमाग में रखते हुए, एंड वी विल टॉक अबाउट द फैक्टर्स इन अ लिटिल टाइम, इन अ लिटिल बिट, बट बहुत सारे फैक्टर्स को नज़र में रखते हुए तो वो अलाउ करती है यूनियन को एक स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, एक फॉर्मूला बनाने के लिए कि वो कितना पैसा कौन से स्टेट को दे. So the very first thing that it basically tells the union government is, if the union government, let's say, is making 100 rupees, now out of every 100 rupees, how much money should go to the state governments? So for example, if we talk about right now, so out of every 100 rupees, like let's say 41 rupees has to go to the states. Now, out of this 41 rupees, how much should Punjab get? How much should Maharashtra get, or Gujarat, or for that matter, Uttar Pradesh? That is also decided by the Finance Commission. So let's try to read this a little. So, who constitutes the Finance Commission and who appoints the chairman and the members? It's the president, right? And it happens every 5 years, or maybe even before that, right? And so it consists of one chairman and four other members. And like I said, what is the duty of the commission? To basically make recommendations to the president. And you have to understand that these recommendations, they are not really binding upon the union government per se, but it's just like a visionary statement that this is how you can make sure that there is development in each and every state government. So these recommendations, A is basically, how should you distribute the net proceeds of taxes? जितना पैसा कमा रही है यूनियन गवर्नमेंट, वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ कैसे इसको मतलब कितना देना चाहिए, राइट? कैसे डिवाइड करना चाहिए. And the second one is grant in aid. What is grant in aid? What is a grant? I make a demand, right? You put a vote on it, you legitimize my demand. That is when it becomes a grant. मतलब अगर कोई राज्य सरकार कोई डिमांड करती है कि भाई XYZ डेवलपमेंट के लिए हमें पैसा चाहिए, तो सारे के सारे संसद में बैठ के, पार्लियामेंट में बैठ के उसके ऊपर वोट करेंगे. जैसे ही वो डिमांड के ऊपर आपने वोट किया, तो वो चीज डिमांड क्या बन गई? ग्रांट. ग्रांट इन एड. एड मतलब टू हेल्प द स्टेट गवर्नमेंट्स. एंड कौन से वाले फंड में से ये पैसा निकल के आएगा? ऑब्वियसली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, क्योंकि हमको पता है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है, सरकार का जो फंड है केंद्र सरकार का, ये कहाँ पे है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में है. एंड जो नॉर्मल खर्चे होते हैं, द नॉर्मल एक्सपेंडिचर्स, दे टेक प्लेस फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. सो इसमें से कितना पैसा निकाल के हम स्टेट्स को दें ताकि उनकी डिमांड्स मीट हो सके, ताकि उनकी हेल्प हो सके, दैट इज ऑल्सो द फॉर्मूला फॉर द सेम can be suggested by the finance commission and any other matter for
whenever the president says that this is what we require for our fiscal prudence, so you kindly come up with like a formula or a strategy. That is something that the finance commission does. So like I said, in very simple language, how much money should the center give to the state and how much should each state get? So this is basically just for your knowledge. You do not have to learn it. CLAT is not going to ask you this at all. But like I said, I told you that कितना पैसा जाना चाहिए center को कितना पैसा देना चाहिए to the state. So as per the 15 Finance Commission, it is 41%, right? Um, and then how much should each state get? वो 41% या 41 rupees of every 100 rupees में से पंजाब को कितना मिलना चाहिए XYZ, कौन से फैक्टर्स से ये आप डिसाइड करते हैं? So the very first factor that they keep in mind is something called income distance. Now, what is income distance? I'll give you a very, very simple example. Imagine that you're in a class, of course you are, and then there is a topper, right? And एक टॉपर हो गया और एक बच्चा हो गया जो बिल्कुल एंड में उसका सबसे लास्ट वाला स्कोर है, राइट? और ये बच्चा सेकंड आया, ये थर्ड आया, ये फोर्थ आया. अब एज अ टीचर सबसे ज्यादा मेहनत मुझे किसके ऊपर करनी चाहिए? द किड हु हैज कम लास्ट. दैट मीन्स जिसके मार्क्स का डिस्टेंस सबसे ज्यादा है फ्रॉम द टॉपर. और सबसे कम मेहनत मुझे किसके ऊपर करने की जरूरत है? जो कि सेकंड आया है, क्योंकि ऑब्वियसली उसके मार्क्स तकरीबन आसपास हैं विद द टॉपर. अब ये क्लास में और स्टूडेंट को हटा के एक राज्य सोच लो, ये टॉपर राज्य है कि भाई इसको कोई जरूरत नहीं है सेंटर के पैसे की, इट इज ऑलरेडी मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी. And let's consider this child whom we said has come last as a state that is not able to make a lot of money. तो जितना डिस्टेंस ज्यादा होता है एक स्टेट का, द पुअरेस्ट स्टेट, हमें उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए. दैट मीन्स ज्यादा शेयर मिलना चाहिए उसको फंड्स का. और जो सबसे मतलब सेकंड में है, इट इज मेकिंग इट्स मनी ऑन इट्स ओन, उसको सबसे कम वेटेज मिलनी चाहिए. दैट इज द फर्स्ट थिंग. देन ऑफ कोर्स एरिया. द मोर द एरिया, the more is the money required for development. There, I mean, it doesn't require any rocket science to understand this. You see, for the longest time we used to take population. I mean, population is also the same. जितना population है उतना पैसा की requirement होएगी. अब पहले हम लोग 1971 का सेंसस के बेसिस पे पैसा देते थे और अब हम 2011 के बेसिस पे दे रहे हैं. अब इसमें ना प्रॉब्लम हो जाती है. दिस इज जस्ट समथिंग दैट माइट बी इंटरेस्टिंग फॉर सम ऑफ यू. अब क्या है ना, दो टाइप की स्टेट्स हैं. एक जिसने रियलाइज किया कि यार इवन इफ वी इंक्रीज द पॉपुलेशन आफ्टर 1971, हमें पैसा तो 1971 की पॉपुलेशन के बेसिस पे ही मिलने वाला है. तो इससे अच्छा है पॉपुलेशन को इतना ग्रो ना करें, हम थोड़ा कंट्रोल करें पॉपुलेशन ग्रोथ, ताकि हमें और फायदा हो. सो फॉर एग्जाम्पल, population in a state in 1971 was 10. Now in 2023, let's say that population is 100, for example, right? I'm not talking about 2011 right now. अब अगर मुझे पैसा इसी पॉपुलेशन के बेसिस पे मिल रहा है तो मेरे लिए लेस इंसेंटिव है पॉपुलेशन ग्रोथ. इससे अच्छा मैं पॉपुलेशन को थोड़ा सा कंट्रोल करूं ताकि मेरा ज्यादा पैसा मेरे को ज्यादा फायदा मिले. अब जैसी सरकार ने बोला नहीं 2011 के बेसिस पे आपको पैसा मिलेगा, तो ऐसी स्टेट्स जहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई वो तो बहुत ज्यादा खुश हो गई, बिकॉज इन द येस्टर ईयर्स उनको इतना फायदा नहीं हो रहा था. लेकिन अभी बिकॉज दे हैव सो मेनी पीपल, दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ फंड्स. एंड द स्टेट्स पुअर थिंग्स जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल करने की कोशिश की वो तो बेचारे रह गए. दे आर लाइक, ओ गॉड, व्हाई डिड वी टेक सच पॉलिसीज? we should have also allowed the population to grow at an exponential rate. So you have to understand to make, so the states wherein the population grew a lot were the north states, northern states, and the states जहाँ पे कंट्रोल किया पॉपुलेशन को वो साउथ की स्टेट्स थी. अब साउथ की स्टेट्स को भी आपको थोड़ा सा तो इंसेंटिवाइज करना चाहिए टू कंट्रोल देयर पॉपुलेशन, क्योंकि अगर I don't see it as an incentive, then as a government I would want that every household should produce a lot of babies. And of course we do understand that the resources are less, so you need to incentivize such things also. So just to incentivize that, demographic performance करके एक चीज इंट्रोड्यूस की सरकार ने, जहाँ पे बोला ठीक है, if you are controlling the population then we will give you some incentive in terms of funds. तो यहाँ पे नॉर्थ खुश हो गया, यहाँ पे साउथ खुश हो गया. Then is forest cover. Now think like an industrialist. You see, a lot of forest cover means I don't have area to make a lot of industries. So I'd rather cut down those trees and make industries and make money out of it. लेकिन अगर सारे इंडस्ट्रियलिस्ट सारे के सारे पेड़ काटने लग गए फिर तो बैंड बच जाएगा एनवायरनमेंट का.
तो इसीलिए एक तरीके का हम इंसेंटिव दे रहे हैं कि अच्छा ठीक है, आपके राज्य में फॉरेस्ट कवर है, चलो आप ये एक्स्ट्रा पैसा लो, प्लीज उसको काटना मत. द मनी दैट यू आर नॉट एबल टू मेक बिकॉज ऑफ दोज ट्रीज, द यूनियन गवर्नमेंट विल गिव इट टू यू. ये पहले होता था. अब इन लोगों ने केवल फॉरेस्ट नहीं, पूरी की पूरी इकोलॉजी के बारे में फोकस करते हुए they have changed this matter, the 15th finance commission, that we will see the ecological balance in your state and the forest, and if you are able to maintain that, then we will give you that kind of money. And finally, tax and fiscal efforts. Like if in a state you are making prudent expenditure, अगर एक राज्य सरकार prudently पैसा ढंग से खर्च कर रही है तो उसको और पैसा मिलेगा. एक राज्य में से अगर टैक्स पेइंग सिटीजन ज्यादा हैं और वो टैक्सेस ढंग से ऑन टाइम फाइल कर रहे हैं, चोरी नहीं कर रहे टैक्सेस की, because of maybe some kind of public awareness campaigns that the state governments have taken in. So just to give them an incentive that, a good job done, we will give you more money. So these are certain criterias on the basis of which this is done. ज़्यादा से ज़्यादा what you can keep in mind is सबसे ज़्यादा importance या सबसे ज़्यादा weightage किसको मिलता है, income distance, and सबसे कम weightage किसको मिलता है, tax and fiscal efforts. But I still believe that this is not something that can be asked. This is just and if a child is inquisitive, which I hope that you are and you should be, that is for you. Anyway, certain more trivia which is important. So, chairman of the first finance commission, which was constituted in 1951, the first finance commission chairman was KC Neogi, and the 15th finance commission, right before Arvind Panagria Wali commission, was NK Singh, right? And a little bit about this man, who is the chairman of the 16th finance commission, is that he was also the first vice chairman of Niti Aayog, our think tank, right? He was also a former chief economist of the Asian Development Bank. He has also worked with the IMF and World Bank, but not at like a very particular post, but he has worked with them, written a lot of research papers. But yeah, of course, you should know chief economist, right? He has also received the Padma Bhushan in 2012 by our president, and he was also appointed as India's Sherpa for the G20 talks in 2015. So that is that about this particular topic. I will see you guys soon. Thank you very much.